Question is, if limit x tends to 2, sine of x cube minus 5x square plus ax plus b upon under root x minus 1 minus 1 log of b x minus 1 equal to m, then we have to find the value of a plus b plus m. Four options are given to one of the options is correct. Question is on limits. In this case, three question of concepts of limits are applicable. First concept, limit theta tends to 0, sine theta or theta equal to 1, then limit x tends to 0, log of 1 plus x upon x that is equal to 1, and by rationalization method. Algebra on limits we can use according to our experiment, according to our requirement. Now in this case, one is log of ex minus 1 limit x tends to 2. This can be written limit x minus 2 tends to 0, then x minus 2 plus 1 upon x minus 2. This will become 1. It means इसमें हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया x minus 2 से, तो इसका आंसर आएगा x minus 2. Limit we can put partially according to our requirement. जिसको फॉर्मूला पुट कर दी उसका वैल्यू पुट कर दी, बाकी वैल्यू रिटेन कर दी, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. राइट. सेकेंड है रेशनलाइजेशन. रेशनलाइजेशन में अंडर रूट x minus 1 minus 1 इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया x minus 1 minus 1 under root x minus 1 plus 1 upon under root x minus 1 plus 1. On simplification this comes out to be, हमने पुट किया, सिंप्लीफाई करके आ गया x minus 1 upon इसमें आ गया 2 minus 1 plus 1, ये आ गया x minus 2. We put the limits according to our requirement. एक x minus 2, एक x minus 2. Next, limit sine of x cube plus sine of x cube minus 5x square minus again minus 5x square 5x square plus ax plus b upon x cube minus 5x square plus ax plus b limit x tends to 2, और इसको पुट कर दिया x cube minus 3x square plus ax plus b minus 5x square plus ax 5x square plus ax plus b. इसको हम for limit to exist इसको हमने 1 पुट करते हैं, तो सिंप्लीफाई करके आएगा x cube minus 5x square plus ax plus b. Now, after all the three steps, question reduces to on simplification. Reduces to limit x tends to 2, x cube minus 5x square plus ax plus b upon x minus 2 whole square twice
that is equal to m. Right? Now move further. Now in this case, for limit to exist, numerator should have repeated roots of x minus 2 two times, right? इसको हम सिंप्लीफाई करें, repeated roots two times for limit to exist, numerator should have, that is let fx equal to x cube minus 5x square plus ax plus b. Then f2 should be equal to 0, f dash 2 equal to 0, right? f2 equal to 0, that is 8 minus 5x square, 20 plus 2a plus b, 2a plus b equal to 12, 2a plus b equal to 12, and f dash x 3x square minus 10x plus a, f dash 2, that is 12 minus 20 plus a equal to 0, a equal to 8, a equal to 8 आ गया. If a equal to 8, substituting in this one, b comes out to be 2a plus 8 equal to 12, a equal to b comes out to be a equal to 2a plus b. This comes out to be, you simplify f dash 2 x cube plus 3x square minus 10x plus 3 star 12 minus 20 plus a equal to 8. A equal to 8. This is a, we have to put a equal to 8. So 16, 2a plus b. 16 plus b equal to 12. b comes out to be minus 4. a की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, उसमें पुट करते हो. Now move further. Using equation of a and b, value of limit x tends to 2, x cube minus 5x square minus a की वैल्यू कितनी थी 8x plus 8x minus 4 upon x minus 2 whole square twice equal to m. अब इसके रिपीटेड रूट्स देखिए, ये आएगा x माइनस 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू 2 इक्वल टू m. ये कट गया, पुट द लिमिट्स 2 2 minus 1 equal to m, so m comes out to be 2. Therefore, value of a plus b plus m equal to 8 minus 4 plus 2, that is 6. This is the answer. That's that. B is the correct answer. Actually, इसको एक्सप्लेन करने में टाइम ज्यादा लगा, पूरा लेंथी प्रोसीजर एक एक स्टेप से बताया. अदरवाइज इट कैन बी सॉल्व इन वेरी मिनिमम पॉसिबल टाइम. 2-3 मिनट में क्वेश्चन का 2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, राइट.
इसको orally कर लें, इसको orally कर लें, इसको orally कर लें, कर करा के इसको finally we can reach at this step directly if you know the concepts, right? Next question. In this session of limits, up to this any doubt, please comment. This session being very important for these, it is requested go through the session completely. Further, we are going to discuss expansion of sin x and cos x in questions of limits taken from JEE Main PYQ 2026. इसी के साथ साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सेटिस्फाइड को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद colleagues and friends. Now move further. Question is the product of all possible values of a for which limit x tends to 0, 1 minus cos ax into cos of a plus x into cos of alpha plus 2x upon sine of a square a plus x into x equal to 2 is, four options are given to, one of the options is correct, right? In the given question, it is observed that one formula will be applicable, limit theta tends to 0 sin theta upon 2 to 1. ये सेम होना चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके उसको सेम करके आंसर को मैनिपुलेट कर लीजिए, राइट? सेकंड, expansion of cos x, expansion of cos x, that is equal to cos x can be expanded as 1 minus x square by factorial 2 plus x4 by factorial 4 minus higher terms. One this concept will be applicable, one this concept will be applicable, right? And ax square plus bx plus c alpha plus beta minus b upon a product of the roots c upon a, right? In this case now इसको लिख सकते हैं 1 माइनस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस a square x square upon factorial 2, that is 2 plus 1 minus a plus 1 whole square x square of 2 plus into 1 minus a plus 2 whole square x square of 2 plus this upon sine of a plus 1 x इससे डिवाइड भी कर दिया, a plus 1 into x whole square से a plus 1 whole square into x, so that is equal to 2. Now, what is the main technique here? Limit x tends to 0. ये तो 1 हो जाएगा, this is equal to 1. न्यूमरेटर में अब ये सिंप्लीफाई करके आएगा 1 माइनस remaining only x square term, retaining only x square terms and rejecting higher terms. Region higher term 0 होती जाएंगी, 1 minus a square x square by 2 minus a plus 1 x square by 2 minus a square a plus 2 x square whole square by 2 and so on, divided by ये 1 हो गया, a plus 1 whole square into x square, that is equal to 2, that is equal to 2. अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई करके, लिमिट x टेंड्स टू 0, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगी, x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये बचेगा हमारे पास a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर,
ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर काट दिया, फिर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए प्लस 1 होल स्क्वायर बाई 2 प्लस ए प्लस 2 होल स्क्वायर बाई 2, राइट। ऑन सिंपल ये अपॉन में क्रॉस आया, ए प्लस 1 होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2। ऑन सिंप्लीफिकेशन दिस वन, एक्स की वैल्यू सारी खत्म हो गई, लिमिट इज ओवर। ऑन सिंप्लीफिकेशन, ये सिंप्लीफिकेशन मैंने आपके लिए छोड़ दिया। वी गेट अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज ए दिस इज ए, अल्फा नहीं, दिस इज ए दैट इज -1 upon -1 that is -1 is the answer. Let's check. C is the correct answer. इस केस में डायरेक्ट मेथड, बिकॉज टू एक्सप्लेन द थिंग्स क्वेश्चन लेंथी लगता है, अदरवाइज इसमें एक्सपेंडिंग करके फर्स्ट टू टर्म रिटेन करके ये पुट करके हार्डली 1.5 मिनट्स में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ना क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x tends to 0 x square upon sin square x square minus sin square x is, 4 options are given to, one of the options is correct. Concept applicable in this case, limit theta tends to 0 sin theta upon theta and expansion of sin x. Sin x, that is x minus x cube by factorial 3 plus x by 5 factorial 5 and so on. तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x tends to 0 x square sin of x upon x whole square into x square upon x plus sin x x minus sin x, right। इसको फर्दर सॉल्व किया, लिमिट x tends to 0 x4 into sin x upon x whole square upon x plus sin x upon x into x minus एक्सपेंड कर दी, x minus x cube by factorial 3 plus r term, right। On simplification, limit x tends to 0, एक x यहां से कॉमन लिया, x4 into sin x upon x whole square upon x कॉमन लिया, 1 plus sin x upon x into x कैंसिल हो गया, बचा x क्यूब बाई 6, हर टर्म 0 हो जाएंगे, लिमिट पुट करेंगे तो x क्यूब बाई 6। अब इसको सिंप्लीफाई किया, x4 से x4 कैंसिल हो गया, पुट द लिमिट्स, तो ये आंसर आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1 बाई 6 इक्वल टू 3। I think B is the correct answer, right? Now, I would like to request, if you are new to my YouTube channel, City Shift Learns, please like and subscribe to my channel and press bell icon to receive updates on concept killing videos. Thank you.